Okay, guys, let's start. I think you guys are getting confused, so let me quickly help you with this one. And if you still don't get it, we'll have to do this practical or maybe this theory session again. Uh, can all of you see the screen and hear me well? Yes. Okay. So when it comes to VNET, and then we have site to site, and then we have express route. So it is already there in the OneNote. I will delete this. This is just for the explanation. And later you can refer the OneNote or you can refer the video. So when it comes to VNET, what we can use is VNET peering. What else can we use? It's VNET to VNET on VPN. So I'll call it VNET VPN. Okay, so when it comes to VNET, we can use VNET peering. We can use VNET VPN. VNET peering we can use when it is in same subscription or in same tenant. We can use that time. VNET to VPN we can use when it is in same subscription, same tenant. We can use that time as well. Okay, do not think it as of के ये यहाँ पर use हो सकता है तो यहाँ पर नहीं. There are multiple ways. एक चीज multiple जगह use हो सकती है. Talking about site to site. Site to site कहाँ पर use होगा? Site to site can be used between Azure to Azure. So when I say Azure to Azure, इसका मतलब है two different tenants, right? And we can use between Azure to any cloud, AWS, GCP, any cloud, and then Azure to on-premises. Is it clear? And express route, it is only when we have Azure to on-premises. Now, if a question comes like this, या यहाँ से आ जाए कि VNet over VPN कहाँ use होता है? So you should know. So this is also VNet Azure to Azure हम कर तो रहे, right? ये through VPN ही हो रहा है. Site to site हो रहा है, but this is through VPN. Point to site is a different thing. We'll discuss that later. Point to site is completely different. All of these are site to site. Point is something an end user, जहाँ पर आप VPN वगैरह देते हो किसी एक end user को login करने के लिए. So we'll discuss about it later. फिलहाल we'll just focus on site to site. So this VNet to VNet कहाँ पर use होगा? This could be on VNet peering, or you can say let's not use the word VNet peering. It can be confusing for you. Let me mention here. Same tenant, different subscriptions. यहाँ पर हो सकता है. Okay, I'm not making it a proper diagram because it is all there in this OneNote. यहाँ पर आप लोगों को detail में मिल जाएगा that which one to be used where, किसको कहाँ पर use करना है. यहाँ पर सब कुछ detail में already लिखा हुआ है. So here this is just for the understanding purpose of this session. इसलिए मैं इसको ज़्यादा decoration ये नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. So same tenant will use VNet. Different subscription we can use VNet to VNet, and obviously VNet to VNet over the VPN. When it comes to Azure, it means different tenants, different companies. Azure to Azure. Azure to any other cloud or Azure to on-premises. We can use site to site. An express route, it is specific to Azure to on-premises. Is it clear to all of you now? Yes. मतलब इसके कॉम्बिनेशन आप लोग देख लो कि किसको कहाँ पर यूज कर सकते हो. वैसे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा सा इजी वैसे ही हो जाएगा. सो व्हिच प्रैक्टिकल आर वी डूइंग टुडे नाउ? व्हिच सिनेरियो डू वी हैव हियर आउट ऑफ दिस? Is it same tenant, different subscription? What is it? Site to site. Under site to site, which one?
Different tenant. Different tenant. So this is what we are doing today. I have my infrastructure in one tenant and Srishti has her infrastructure in different tenants. So I'm selecting this and she'll also do the same thing. Okay. Now this is my local gateway, my network gateway, virtual network gateway, the one which I created, which is affiliated to my gateway subnet, right? Now I will have to create a local network gateway. A local network gateway. One is our gateway subnet. This is our local network gateway. VNET gateway जो हम लोगों ने बना लिया, ये VNET gateway किस पे बन रहा है? It is associated with our gateway subnet. इसके बाद हम लोग बना रहे local gateway, network gateway. Now what is a local network gateway? A local network gateway is nothing but a representation. It is a representative of your tenant, of your another tenant or your another cloud, जो भी वहां से आ रहा है. Let's say if it is Azure, it is AWS, it is from on-premises, it is from IBM Cloud, GCP, any cloud. वो लोगों ने भी कुछ ऐसा सेटअप कर रखा होगा. So they will share their details. So this local network gateway, it is a representation of your second party, जो भी वहां से आपके साथ peering करना चाहता है. Is it clear, guys? Yeah. Did anyone who did not understand? Is there anyone there who did not understand? Yes, guys. Anyone? I'm asking this several times because there are plenty of practicals और बहुत सारी चीजें जो इस पे डिपेंड करेगी. आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा. So I hope this is clear for everyone, right? So when I say local network gateway, now I am configuring local network gateway. I'm creating one and it is asking a name. What should be the name? वैसे तो कुछ भी हो सकता है, but logically क्या नाम होना चाहिए? What is it? What did I explain कि local network gateway क्या है? It is representing your other network. So in this case, which is the other network I'm dealing with? UTK. Right. So I'll mention that name here. Right. I will say UTK network. That should be enough. जैसे भी आपका naming convention हो. Which IP address I'll type here? What do you think, guys? This will be the subnet, right? Which one? Gateway subnet IP address. Will subnet have one IP address? Okay. Can subnet Yeah, have right. one IP address? No, right? Uh-huh. So which is one IP address? What am I representing here? Your network, right, Srishti? Yeah. So which is your network? The one which you have created? What is that? Where did you use one IP? Which component while creating which component? Let me give you a hint. This is a public IP. By creating a VNet. Or what? Do we use a public IP while creating a VNet? Virtual machine. Virtual machine. No, virtual machine we never use. I have told you that virtual machine के public IP हम सिर्फ remote लेने के लिए use कर रहे हैं because we do not have that sufficient infrastructure. So VPN, it was a VPN gateway when it asked you to create a public IP. Yes, which component? Same. Yes, sister, did you get it? Which component? Yes. Which component did you create and use a public IP? I mean, yesterday you created, today I created, so I understand you must have forgotten. But which component is there जहां पर हम लोगों को public IP use किया हम लोगों ने? VPN gateway. Right. So could you share your VPN gateway's public IP with me? And you can stop your configuration as of now because I will share the same details of these
all of these can see कि ये मिलते कहाँ पर है चीज, otherwise now you will read and they won't even understand कि कहाँ से मिला है. So when you will be configuring, I will go on my page and I'll let you know. Yes, so could you tell me your gateways, your virtual network gateways public IP? Yeah, I've shared it on chat. Great. So we'll require only number here. If you copy, वो पूरा नाम आ जाता है, but we will require only number. Now it is asking for address space. Here I require the address space of your virtual network. Which virtual network? The virtual network, वो वाला virtual network जिसका आपका ये जो VNet का जो public IP आपने शेयर किया, ये किस सबनेट पे है by the way? This is a part of a subnet, right? Which subnet it is associated with? TK version. A gateway subnet. We created a gateway subnet, and that gateway subnet, it is a part of which VNet? Are you getting the question? My question here is, I am Yeah, representing your my network. Sorry. it's on Christie's VNet. Right. So now here I require your address space. So now what do you mean by address space? I mean, we have discussed this many times in past videos. Not sure if you got chance to cover it now, but how will you get the address space of your VNet? Can you share the address space of your VNet? I don't know. Click I on don't know VNet. how to. That's okay. Okay. I understand because this was done in previous lectures, but it's very simple. Click on your VNet. Yeah, I did. And on the overview, left hand side, do you see the overview? By default, you land on the overview page. So Yes. overview page, Address space, I got it. address space, right? Is this your address space? Yeah, right. Okay. So I'll simply click on OK. So now here I have name. I've selected, I've decided I'm going site to site because these are two different tenants. And this is my local virtual network gateway, the one which I have created, the virtual network gateway. Don't get confused when I say local, इससे मतलब था कि मेरे अपने इस पे जो बना हुआ है. And this is local network gateway, which means it is representing your virtual network gateway. जैसे यहाँ पर दो बने हुए, यहाँ पर एक मेरा बना हुआ है, एक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ है, राइट? सो टू रिप्रेजेंट दैट, बिकॉज दैट इज नॉट अपीयरिंग हियर, यहाँ पर अगर वो अपीयर हो जाता तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट टू रिप्रेजेंट दैट आई हैव क्रिएटेड वन local network gateway, and now I'm using a security key. See, based on this, not anyone can attach, only those people will be able to attach to your network group जिनके साथ आपने ये की शेयर कर रखी है, ठीक है? And then border gateway protocol, do you want to enable or disable? We'll discuss this later. वैसे core networking वाला topic है, so we are not getting into this. If anyone wants to learn, हम एक आधा session ले सकते हैं, but no one is going to ask you about border gateway protocol. ठीक है? We'll keep all those these two box unchecked. Protocols, these are different protocols. You can see, you can click on learn more और देख सकते हो आप कि IKVA में क्या differences है, इसमें क्या difference है, किस तरह के कनेक्शन सपोर्ट करता है, कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. प्रोटोकॉल्स के डिफरेंस में यही होता है, एक वर्जन नया आता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सपोर्ट करता है, थोड़े से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. सो इवन यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट, दैट इज फाइन. ठीक है? सी बिकॉज़ गाइस, व्हाट यू विल बी पोर्ट्रेइंग इज योर जॉब वाज टू इम्प्लीमेंट. तो आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से सीखना है, राइट? यू विल से कि ये सब तो हमको वैसे ही लो लेवल डायग्राम में आता था, एंड दिस इज मतलब दिस इज अ फैक्ट. ये बस ऐसा झूठ नहीं बोल रहे हो आप.
These information we discuss at architect level. Now when I work with my project, ये हम पहले discuss कर लेते हैं. इसके discussion में this is a small check box. ये जाना है, ये जाना है. But इसके एक discussion में 6 या 8 meetings होती है, बहुत लंबा चौड़ा पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ होता है. इन डिटेल देखा जाता है कि आपके एप्लीकेशन के साथ कौन सा ज्यादा सुटेबल है, और उसके बाद डिसाइड होता है that which one do you go with. So you don't have to worry about this. You will simply say कि ये डिटेल्स हमारे पास लो लेवल डायग्राम में आती थी कि do we have to go with BGP, ये करना है नहीं करना है, शेयर की क्या होगी, प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा, एवरीथिंग you get with your low level diagram. And here I'll simply click OK, and I'm done with this. But do you think the connectivity is on now? What do you think, guys? What is pending? Do we need to repeat these steps as Srishti's resource as well? Exactly, same thing we'll have to repeat over there. Right? इसके बाद अगर आज टाइम बचता है तो मैं VNet peering एक और बार समझाऊंगा, तो वो एक्सेस वाला इशू आप लोगों का वैसे ही सॉल्व हो जाएगा. It isn't a big deal. यही चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूं मैं. सी, अगर if I have that capability to do everything sitting on my PC, तो मैं यहाँ पर क्यों करूंगा यार? मैं किसी बैंक के VNet से कनेक्ट हो जाता हूँ डायरेक्टली, एंड देन वंस आई एम इन देयर नेटवर्क I can do lot of things. Right? So both ways, both of them they will have to do together. Unless आप लोग एक सब्सक्रिप्शन में हो, इसलिए हम VNet peering simply कर देते हैं. But we'll come back to that later. So now, Srishti, could you please go to your virtual network Okay. and go to your virtual network gateway. Yeah, I'm on the connection page. You're already there on connection. Great. Yeah. My connection, it is being created now. Click on add. Yeah, I'm adding a local network gateway now. I would need your IP address and address space. But don't, Swell, one question. Yes, Amit. So instead of naming it local, they should have named it remote, right? Because we're getting information from a remote cloud. हाँ, वो तो यार एज अ फीडबैक ही सबमिट कर सकते हो ना. जो है हमको तो वही पढ़ना है और उसी को ये करना है, राइट? Because if we local, ऐसा लगता है कि we have to enter some information within our tenant or something. I understand, but this is the local representation of that. उनका लॉजिक कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई एग्री करे ना करे, बट इंटरव्यू में तो हमको यही बोलना पड़ेगा, राइट? और हमको सीखना ही पड़ेगा एज ऑफ नाउ. Yes, you can definitely submit a feedback to them, and if they agree to change the name, वो एक अलग चीज है, बट फिलहाल हमको इसी टर्म्स के साथ आगे ये करना पड़ेगा. Okay, status shows unknown. Sorry, Srishi. So you're looking for what information are you waiting for? Your IP address and address space. Okay, so where will I get my IP now, guys? Look at this carefully, because last time when I configured, you were not looking at this information. Srishti was reading it from her screen. So now she wants my IP address, which is my public. Did you already give the name? Yes. Okay. So when she says IP, इसका मतलब है कि मेरे virtual network gateway का IP. So here it is, Srishti. It is. Do you want me to copy this? Yeah. Okay, I'll send it to you. Wait. I shared it. Got it. An address space. Address space. Now, which address space, guys? What I was trying to say there, that this gateway, this network gateway, it is connected, it is associated with one of the subnets, and that subnet, it obviously connected with one of the VNet. So we'll require an address space of that VNet. Either we can look here that it is a part of gateway subnet वगैरह कहाँ से, otherwise simply we have that VNet here कि ये किससे affiliated है. So I'll click here. There are two places where I can see address space. One is here. Can we select a smaller address range out of that VNet? No, you cannot. Because you're doing a VNet peering. आप पूरा VNet को पेयर कर रहे हो. So you cannot
have a smaller, you can create, you can design your VNet in that way. अगर आपको छोटा ये करना है तो पहले से आप अपना नेटवर्क छोटा डिजाइन करो. I mean, if we just want to give access to certain subnets or certain space, we No, cannot that is do that, no, right? that is not. The moment you give access to one subnet, by default सारे subnet पूरे इसको access मिल ही गया. Subnets can talk to Okay. each other, guys. Okay. Ultimately, I mean, background में अगर आप इसके टेक्नोलॉजी को देखो ना, तो you are attaching to subnets only. जो गेटवे सबनेट है ना, आप उन्हीं को अटैच कर रहे हो. VNet अपने आप में ऐसे कोई अटैच करने वाली चीज है ही नहीं. VNet में ना मशीन बन रहा है ना कुछ बन रहा है. अल्टीमेटली यू आर जस्ट अटैचिंग टू सबनेट्स. कौन से सबनेट्स? गेटवे सबनेट्स जो हम लोगों ने बनाए थे ना, आप वो दो सबनेट्स को ही अटैच कर रहे हो. बट द मोमेंट यू गेट कनेक्टिविटी टू वन सबनेट, by default all subnets are connected. Are you guys getting it? Should I use same shared key? It is not optional, you have to use it. That is the Oh. Key pass, I would say, or a password sort of. If you use a different key, it is not going to work. And not only key, version also you'll have to select same. So those two boxes, keep them unchecked. iKey version 1. Yeah. That is a kind of password key. I'll share a document with you guys कि जब नोटपैड में इंफॉर्मेशन आती है तब किस तरह से दिखती है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो, so I don't want you to get confused. I hope you selected the same SKU, right? Once done, Yes, I selected the same. Yeah, it's done. once done, click on OK. Any other information it is asking? No, actually it disappeared. I don't see it under my connection. Click here on notification and you will see creating. Yeah, it's great. Site to site. Peer network is UTK network. For you, it will show whatever name you have given. Right, you have filled these details. यहाँ पर नाम दे दिया आपने, site to site select कर लिया. I hope you use this shared key, proper shared key. Yeah, And I hope you same. use this one. Right here, it will Yes. show your subscription, and here it will show your location, not mine. Yeah. So while this is getting created, guys, one question: what do you think? Will I be able to create one more connection here? Let's say that my VNets, I have 4 Azure subscriptions or 2 Azure and 2 AWS, and I want to do that connectivity. तो gateway subnet तो एक ही बार बन सकता है, right? बार बार तो gateway subnet नहीं बन सकता. There can be only one gateway subnet. So with that one gateway subnet, I have created this virtual network gateway. So with this, can I connect to multiple networks? Can I create more connections? What do you think? It seems so because Yes, you can. It's logically, simple. logically, like VPN ek create kar diya, then we can keep adding virtual networks because there Perfect. could be like multiple virtual networks in multiple tenants, right? So now Srishti has worked on her infrastructure. I will show it to you. Let's see how it looks on hers. See, this is practice session. I have access on all of them. Hence, we are able to see. Otherwise, when you work in the actual environment, you will not have this liberty कि किसी उसका भी जाकर आप चेक कर लोगे, ये नहीं होगा, right? This is practice session and we have access on each other's subscription. इसलिए मैं देख पा रहा हूँ. Otherwise, you will have to share all these details बहुत ही secure way में, maybe email, या फिर when you do it with AWS का एक पूरा एक नोटपैड एक्सपोर्ट होता है और उस पर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है. सो you should be able to read that information. I'll share that with you. For sure, I will share one with you. ठीक है कि किस तरह से दिखता है. So now see, this is how it looks. This is on Srishti's infrastructure VR. Her local's name is UTK. Her peer network is Tsoft. Status shows unknown because it will take some time to show it connected. On my, it is shown not connected. Local name is Tsoft. Peering is this one, UTK. It takes some time to show connected, but most of the time connectivity इससे fast हो जाती है. Status change होने में time लगता है, but connectivity इससे काफी जल्दी हो जाती है. ठीक है? So it is still showing not connected and unknown, but we'll see and go
if these are connected and machines are pinging to each other. And I can see those are pinging already. Can you see this, guys? This machine, it is in Tsoft, it is in my tenant. Let's say a company, a TCS, an IBM, or any company, which could be anywhere. My connectivity, my region is Korea Central, and this is in East US. UTK one, it is in East US. Right? So this is how you can establish a connectivity between two clients. Whenever they have any business requirement, this is what you can do. I do not want to proceed with any other topic, guys, today. Do not want to make any confusion. So we'll take questions here. And if you do not have any questions, I'll ask you some questions to see what are you guys learning. So is it clear? Anyone has any doubt, any question, did not understand anything? कुछ भी ऐसा कि ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, why did we do this, why did we do that? And guys, can you see the status is still unknown? शायद 1 घंटा लग जाएगा इसको दोनों को connected show करते हुए, right? But we have our virtual machines, we tried pinging each other, or we are sure about it कि connectivity हो गई है. Right, guys, please come up with your questions. What are gateway VMs? मैं actually definitions पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा backend का कुछ है क्या? Gateway VM. Yes. Sorry, where did you read the gateway VM? When you create a VPN, when you create a VPN gateway VM are deployed to the gateway subnet and configured with the settings that you specified. This can take 45 minutes. Not sure what exactly they're referring to. If you could share the link with me, I'll see. If it is relevant, I'll explain it to you. If it not, we'll leave it. If it is not, we'll leave it. Because if you go by Microsoft documents, बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना होगा आप लोगों को, एंड वी डू नॉट हैव उतना टाइम भी नहीं है और उतनी जरूरत भी नहीं. लाइक ये करते हुए भी मैंने कई ऑप्शंस छोड़ दिए. बीजीपी, आई गाइस, बाय द वे, इट शोस कनेक्टेड, राइट? बीजीपी प्रोटोकॉल we did not discuss because I know we had never asked. इतने इंटरव्यूज में मैंने कभी नहीं पूछा है क्वेश्चन. इतने इंटरव्यूज हम लोगों ने दिए, प्रीवियस बैच पूरा हम लोगों ने ये किया है. They were never asked this question. Right? So we are focusing, थोड़ा बहुत उसी पे फोकस करते रहेंगे जो इंटरव्यू में काम में आने वाला है. Okay, so now it shows connected here, both of these. So this is how it will look. I'll still go through this article, Henty, I'll check, and if I think that this is something suitable or relevant to you guys, I will explain this. Yes, guys, any other question? So in case if the connection fails, how do you troubleshoot? Because we only see one side information. So ऐसा कुछ steps होते हैं? Troubleshoot, let's say, let me first close this. Now depends कि Azure to Azure है तो थोड़ा सा easy होगा, even if you have one side वाला information, right? I did not want to come to troubleshooting वाला part, बहुत ज़्यादा vast हो जाएगा ये सब. You guys mainly focus on deployment, ठीक है? But yes, troubleshooting it's एक अच्छी चीज है सीखने के लिए, but never ever say कि आप troubleshooting करते थे. The moment you go to that playground, आप लोगों से बहुत अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड देन P1 टाइप के ये हो गया, ये छोटा सा पोर्ट मिसिंग है, वो बहुत एक अलग तरीके का एक डिफरेंट कोर्स हो जाएगा. सो नेवर एवर गो टू दैट साइड. इट हैपेंड विद कुमेल. आई थिंक वेरियन का इंटरव्यू था. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वेरियन. We started with the deployment thing. Interviewer took him to troubleshooting. He knew few steps. He jumped into that, and later on, वो पूरा का पूरा interview का playground change हो गया, and then he could not
crack that. You can check with him. If he's comfortable, he will share the feedback with you how it went, and then I again told him not to do that. Yes, coming back to your question, if it is Azure to Azure, even if you have a single view in front of you, but at least you know कि background वहां पर भी क्या हो रहा है, right? You know it well. If it is between AWS and Azure, you will not focus on the other part. You will just focus at your part. So what you can do here, I have been telling you all the time. You have here, see, VPN troubleshoot. यहाँ पर troubleshooting के आपको काफी सारे जो है ये मिल जाएंगे. And then here you can start selecting कि किस इसमें आपको issue आ रहा है. You can start troubleshooting. You can click on learn more. And before this, before you go here, let me click here first. You'll have to select one storage account, by the way, ताकि जहां पर वो सारे logs वगैरह जमा कर सके, right? And इस next level की troubleshooting पे आपको नहीं भी जाना है. So basics जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, what you can do is, first thing you will check, was it already working for any troubleshooting, guys? Basic probing questions will be the same. Was it working already? Is this the first time you configured? Is it the new setup which did not work at all? Was it working already? If it was, when did it stop working? और नहीं चलने का मतलब क्या होगा? पूरा नेटवर्क की अगर कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, let's say the complete network, this network and that network, I think I explained this yesterday also. When you say that there is some issue with this one, अगर दोनों network नहीं चल रहे, then definitely it is your job and you will troubleshoot on this one. Troubleshooting में क्या देखोगे आप? यही सारी चीजें देखोगे. You will ask them कि ठीक है, आप अपना configuration file भेजो and you will check कि कहीं ये तो नहीं है कि आपने BG पे डिसेबल कर रखा है, उसने इनेबल कर रखा है, आपका प्रोटोकॉल IKE1 है, उसका प्रोटोकॉल 2 है, शेयर कीज जो हम लोग एक्सचेंज की थी उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो गए. ये सारी चीजें आप देख सकते हो. उससे भी पहले और एक बेसिक लेवल का ट्रबल शूटिंग है. इफ अ सिंगल कस्टमर कम्स, वो बोल रहा है कि यार मैं इस मशीन को इस मशीन से पिन नहीं कर पा रहा हूँ, what should be your approach? I told you already. कल मैंने बताया था, I think कल परसों. Before you go to this huge level of troubleshooting, what will you do? Yeah, right. Firewall will check the fire. Firewall is secondary. Next, these are Linux machines. We don't have any firewall. A simple step. 1 minute में हो जाएगा and you will come to know, is it a machine specific or network specific or a subnet specific? Not sure. See, this is a practice session, hence we have only 2 machines. Live environment mein there will be hundreds of machines. If a user says, an application owner says, my this machine is not talking to this machine, you simply pick two other machines, उनको ping करके देख लो. If those are pinging, same network में अगर 2 machine ping कर रहे हैं आपके, right? और कोई 2 नहीं कर रहे, what does it mean? Network issue है या VM issue है? Yes guys. Amit, what do you think? Same network में there are 100 machines, all are connecting to each other, all are talking to each other, 2 of them are not talking to each other. Yeah, Is so it will be the, VM issues. Exactly. Machine. राइट, तो इस तरह से आप उसको थोड़ा नैरो डाउन करते जाओ. और उसमें चलिए अगर वो ये बोलता है कि मल्टीपल मशीन्स है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू विल गो टू दैट VNET. ट्रबल शूटिंग वैसे हम एक दिन में नहीं सीखने वाले, राइट? सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा उसमें ये मत करो. बट यस, व्हेनेवर यू हैव डाउट, और डू नॉट कीप दैट क्वेश्चन विद योरसेल्फ, आस्क. उसको हम एक आधा ये कर भी लेंगे, सो उसमें कोई इशू नहीं. इनफैक्ट 1-2 सेशंस जाते भी है ट्रबल शूटिंग में, सो दैट डजंट मैटर. बट डू नॉट शो योरसेल्फ एज अ सपोर्ट पर्सन. सपोर्ट में बहुत सारी चीजें अलग होती है, एंड इफ यू गेट इनटू सपोर्ट, देन आपकी शिफ्ट वगैरह टाइमिंग, मतलब पूरा जॉब प्रोफाइल जो यहाँ पर हम पोर्ट्रे कर रहे हैं उससे एकदम अलग हो जाएगा. सपोर्ट में कॉल्स भी आ जाए शायद, सपोर्ट में देन आपको नाइट शिफ्ट भी आ जाए, सपोर्ट में P1 भी आ जाएगा. डिप्लॉयमेंट इज अ डिफरेंट थिंग. डिप्लॉयमेंट में आपके पास एक लो लेवल डायग्राम आता है, आप उसको रात में बैठ के डिप्लॉय कर दो, आप दिन में बैठ के डिप्लॉय करो. आपके पास एक टाइम दिया है, 1 वीक का टाइम. 1 वीक में मुझको ये 4 VNet 5 मशीन XYZ इतना कुछ चाहिए. इट इज अप टू यू, however you want to do it. So Support in is a that different job, thing. Yes. so right now we created this gateway. So for example, हमें भी low level diagram मिलता है कि तुम्हें ये gateway बनाना है. So we only create it, right? We don't check connected है नहीं है. वो करोगे ना आप, कोई और without checking कैसे आप उसको handover कैसे करोगे, right? This we will come, जब इंटरव्यू के क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो हम करेंगे कि डिप्लॉयमेंट के बाद कितना दिन हमारे पास होता है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड हाइपर
केयर पीरियड, मतलब डिप्लॉयमेंट के बाद इमीडिएटली सपोर्ट को नहीं दे दोगे ना। इसमें क्या होगा कि डिप्लॉयमेंट टीम ने कूफ अप किया और उसका बिल सपोर्ट टीम ये करता बैठ रहा है, देन व्हाई डू वी हैव डिप्लॉयमेंट टीम अगर सब सपोर्ट टीम को ही करना है तो। सो देयर इज अ हाइपर केयर पीरियड कि डिप्लॉयमेंट के बाद एक हफ्ते में कुछ इश्यूज आते हैं, सो यू विल हैंडल दैट बिकॉज दैट इज स्टिल इन ट्रांजेक्शन प्रोसेस की अभी आप दे रहे हो कंप्लीट, आपने लाइव किया नहीं है उसको, आपने आधा बना दिया, क्लाइंट को बोला कि ठीक है आप चेक करो, कुछ इशू है तो बताओ। वंस इट इज सेटअप एवरीथिंग इज फाइन, वंस इट इज वर्किंग, उसके बाद इश्यूज जो है वो सपोर्ट टीम को जाएंगे, दोस विल नॉट कम टू यू। Okay. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस ऑन टेक्निकल थिंग्स, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये करना है, आई विल कवर दैट लेटर। ठीक है, Okay. बट स्टिल दैट डज नॉट मीन डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, प्लीज आस्क, किसी भी So तरह on का the कोई भी same क्वेश्चन है तो पूछ लो। on the वन same मोर थिंग, question, यस बी क्विक, जैसे आपने वी बताया हैव ओनली कि 2 minutes। आपने बताया कि ये आपने को टेस्ट करना पड़ता है, तो आपने कुछ टूल्स वगैरह इंस्टॉल किए हैं। सो व्हाइल वी टेस्ट, बिफोर दैट वी सेंड आस्क समवन सम टीम टू डिप्लॉय दैट टूल एंड ऑल No, we इन द don't have VM। any tool. It's just a VM. Simple VM हमने install किया है. You can do it. उसके अंदर आपने कुछ तो इंस्टॉल किए थे जैसे। नहीं नहीं, that is OS level. वो बहुत basic चीज है. It is as good as कि ओके, Windows पे आपने firewall off किया था, यहाँ पर वो अच्छा, ping वाला ओके, command install नहीं था. That is very basic thing. उसके ओके, चिंता मत करो. That will cover later. या नहीं जब आप आपका पर्पस क्या है, टेस्टिंग करना है, राइट? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद लिनक्स मशीन, डू इट विद विंडोज मशीन, वहां पे कुछ नहीं करना है इंस्टॉल आपको, वहां पे बस फायरवॉल ऑफ करना है। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, फायरवॉल ऑफ करो और वहां से टेस्टिंग कर लो। अल्टीमेट एम इज दैट यू टेस्टेड दिस, उसके स्क्रीनशॉट लगा दिया आपने अपने ईमेल में या जहां पर भी कि हम लोगों ने ये आपने जो टास्क दिया था, हम लोगों ने वीनेट पियरिंग कर ली है, 2 मशीन डिप्लॉय करके देख लिए, दोज आर टॉकिंग टू ईच अदर, दैट्स इट, सिंपल, यू आर डन। नाउ द इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि लेट्स से यहाँ पर एक और सबनेट होता, ठीक है, आई होप इसमें मैं बता पाऊँ इतने कम टाइम में। सो लेट्स से एक और सबनेट होता, नाउ द ट्रबल शूटिंग इज कि यार पब्लिक सबनेट के जितने मशीन्स है वो उस सबनेट से बात कर रहे हैं, बट ये जो भी XYZ सबनेट है इसकी मशीन्स बात नहीं कर पा रहे, देन यहाँ पर आप आके NSG की ट्रबल शूटिंग कर सकते हो क्योंकि ये सबनेट लेवल पे हो रहा है। सो योर वर्क इज टू नैरो डाउन, उसको नैरो डाउन करते रहो, नेटवर्क लेवल पे है तो नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग करो, सबनेट लेवल पे तो सबनेट की करो, उसको और नैरो डाउन करो, वर्चुअल मशीन लेवल पे है तो आप वर्चुअल मशीन पे वर्क करोगे। एंड वर्चुअल मशीन के हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पर आपको ट्रबल शूटिंग वाला सेक्शन मिलता है, क्या क्या करना है, बट यू विल नॉट डू इट। सी डिप्लॉयमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा इजी काम ये होता है ना, कुछ नहीं चल रहा है पूरा स्क्रैप करो और स्क्रैच से बना दो, कुछ भी प्रोडक्शन में नहीं होता है। ठीक है गाइस, विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस हियर नाउ, ओनली 1 minute इज लेफ्ट। दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ वीनेट वाले क्वेश्चंस जो नहीं आए हैं, आई विल गिव सम असेसमेंट टू यू गाइस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग उसका कुछ आउटकम, पिछले वाले में सबने नहीं किया है, so I'll share it with you guys in some time and let's see if you have any questions, please let me know. So we can do this practical, yeah? Yes, why not? It's You'll have possible. to do it. You'll have Okay. to do it, right? I'll let you know कि कौन कौन सा अलग अलग सब्सक्रिप्शन में है, I'll create a pairing like that और उस हिसाब से आप लोग कर लो, like Srishti is in different subscription, someone else who is in different subscription, उस हिसाब से मैं pairing कर दूंगा and then we'll you guys can work on this. Okay, I'll stop it now. See you on Monday guys, bye.